Hello students, here is Isha ma'am and today I am going to discuss chapter 2 of class 4. Subject is mathematics. So chapter 2 is addition and it is in your worksheet number 3. So chapter 2 is addition. What is addition? In earlier classes also you have already studied about addition. Addition का मतलब आप सभी को पता है. Addition का मतलब होता है जोड़ना. जब हम किसी भी दो नंबर को जोड़ते हैं तो क्या होता है वो क्या बोलते हैं हम लोग ऐड कर रहे हैं, हम लोग एडिशन कर रहे हैं. So when we add two numbers, then what are these two numbers called? These two numbers are called addends. What are these two numbers called? Addends. जब हम किसी भी दो नंबर को जोड़ते हैं तो वो दो नंबर क्या होता है? addends. और जो रिजल्ट निकलता है एडिशन के बाद उसे हम क्या कहते हैं? सम. कहते हैं ना फाइंड द सम. क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा फाइंड द सम. तो फाइंड द सम जब बोला जाता है, सम जो होता है वो रिजल्ट को कहते हैं सम. ओके, नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टडी in your addition chapter is addition of five digit number. Addition of five digit numbers. 5 डिजिट नंबर्स का एडिशन हम लोग सीखेंगे. क्लास 3 में आप लोगों ने सिर्फ एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर तक ही सीखा था. आज हम लोग क्या सीखेंगे? क्लास 5 डिजिट नंबर्स सीखेंगे. ओके, कैसे ऐड करते हैं. नाउ इट इज वेरी सिंपल. जब कैरी नहीं होता है, जब रीग्रुपिंग नहीं होता है, देन इट इज सिंपल एडिशन जो आप लोग पहले भी किए हुए हैं. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. क्वेश्चन इज गिवन एड 43,165 and 25,412. So these are the two numbers and we need to add them. So first give the places. Okay, first arrange the numbers into places. Okay, these are 5 digit numbers, so I have arranged the places till 5 digit. Okay, now let's arrange them. First, which number we write? First we write ones place. Now we are going to add them. So first 5 plus 2. 5 plus 2 is 7. 6 plus 1 7. 1 plus 4 5. 3 plus 5 8. 4 plus 2 6. So what is the answer? It was very simple. It was without regrouping. ये बिना कैरी का सवाल था. So it was very simple for you. So answer is 68,577. Okay. Exercise number 2 of chapter number 2, page number
27 of your maths book. Understood? Now, question number 1B. Question number 1 is find the sum. You need to find the sum. If you are said find the sum, sum means addition. Okay? So the question is, so this is the question, we need to add it. Okay? First, write the place values. Okay? Now arrange the digits according to the places. Let's add them. 8 plus 1, how much? 9. 1 plus 6, 7. 7 plus 1, 8. 0 plus 7. Any number we are adding with 0 is that number itself. There is no changes in the number. 7 plus 0 will be 7. 4 plus 5 will be 9. So the answer will be 97,879. Now, next question. Question number 1, F. Okay. 49,999 and 26,745. So this is the question of regrouping. ये कैरी का सवाल है. Okay. Now let's add these two numbers. So 9 plus 5, how much? 9 plus 5 is 14. So 14. So what we will write here? We will write 4 and we will carry this one here. Okay? We will carry this one here. 9 plus 4, 13. 13. We will not leave this number. We need to add this number also, otherwise the whole answer will be wrong. So 9 plus 4, 13. 13 plus 1 will be 14. Carry 1. 9 plus 7. 9 plus 7 will be 16. 16 plus 1 will be 17. Again carry 1. 9 plus 6 will be 15. 15 plus 1, 16. Carry 1. 4 plus 2, 6. 6 plus 1, 7. So the answer of these two numbers are, the sum of these two numbers are 76,744. Okay. Now students, I hope you can do exercise 2 of chapter number 2 by yourself. Now let's come to the next topic. Our next topic is
of 6-digit number. Okay, and exercise number 3, page number 29. Now, in the previous topic we studied about 5-digit number. We added 5-digit numbers. Now we will add 6-digit numbers. Okay. So, exercise number 3, question number 2A. Okay. Here also find the sum of, we need to find the sum of. Okay. So, the question is, okay. Now let's arrange these numbers in according to their place values. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, because it is 6-digit number. So let's arrange them. 2, 3, 2, 0, 4, 5, 1. Next number is 6, 4, 7, 1, 2, 4. Let's add them. Okay. Now 3 plus 6, 9. 2 plus 4, 6. 7 plus 0, any number we add with 0 is that number itself. There is no change in the number. 4 plus 1, 5. 5 plus 2, 7. 1 plus 4, 5. So, your answer is 5,75,769. Now, the next question, let's come to the next question. Next question is question number 2E. So, question number 2E is, so this is the question. Okay, 3,48,978. 3,45,678. So we need to add these two numbers. Let's arrange them. So let's add them. 8 plus 8 will be 16. So 16, 6 I will write here and 1 will be here. Carry. We will carry 1 to the tens place. Now 7 plus 7 is 14. 14 plus 1 will be 15. So I will write 5. Now carry. I will take 1 to hundreds place. I will carry 1 to hundreds place. 9 plus 6. We will add 9 plus 6 will be 15. 15 plus 1 will be 16. Again I will carry 1 to thousands place. Now 8 plus 5 will be 13. 13 plus 1 will be 14. Carry 1. 4 plus 4 will be 8. 8 plus 1, 9. Here no need to carry 1 because it is 9. It is 1-digit number. So here 3 plus 3, 6. So the answer is 6,94,656. This is your answer. Now students, let's come to the another topic
of this chapter. That is word problems. Word problems. Okay. So word problem is in exercise number 5 of this chapter, that is page number 31. Okay. Now your first question. So this is the question. Okay. The question is, the cost of a motorcycle is rupees 42,850. कॉस्ट मतलब प्राइस, कोई भी चीज का दाम मतलब प्राइस. द कॉस्ट ऑफ ए मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल जिसका प्राइस कितना है 42,850. एंड द कॉस्ट ऑफ स्कूटर, स्कूटर आप सभी को पता है स्कूटर क्या होता है. सो स्कूटर का दाम कितना है 28,350. What is the total cost of both the vehicles? टोटल जब बोला जाए क्वेश्चन में, टोटल का मतलब क्या होता है जोड़ना. मतलब टोटल मतलब हमें दोनों का कॉस्ट एक साथ बताना है. तो जब हम टोटल निकालना होता है देन वी ऐड द नंबर्स. सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट वी विल राइट the cost of a motorcycle is 42,850. Again, cost of a scooter is equal to rupees 28,350. Now we need to add these two numbers. So let's add 0 plus 0, 0, 5 plus 5, 10, carry 1, 8 plus 3, 11, 11 plus 1, 12. Carry 1, 2 plus 8, 10, 10 plus 1, 11, carry 1, 4 plus 2, 6, 6 plus 1, 7. So the answer will be thus. So answer will be thus rupees 71,200 is the cost of both the vehicles. You need to write this statement. You need to write this statement. Understood? Question number 4 is a number exceeds 8,76,543 by 12,345. Find the number. So here the question is, एक नंबर, ठीक है, एक नंबर इतना ज्यादा है इससे. कोई एक नंबर है जो कि इस नंबर से इतना नंबर ज्यादा है, तो हमें उस नंबर को निकालना है. फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपको दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ स्मॉलर नंबर, दैट इज I am taking here 10 and I am taking here 5.
ओके, सो अगर हम बोले कोई एक नंबर है जो कि 10 से 5 ज्यादा है, कोई एक नंबर है जो कि 10 से 5 ज्यादा है, ठीक है, कोई एक नंबर जो मुझे नहीं पता है वो नंबर, वो है जो कि 10 में से 5 ज्यादा है वो, तो क्या करेंगे हम? आप लोग तुरंत बोल दोगे मैम वो तो 15 होगा, क्योंकि 10 + 5 हम करेंगे तो 15 आएगा। सेम वे यहाँ पे एक बड़ा नंबर दिया हुआ है, ये बड़ा नंबर दिया हुआ है, इसमें से आपको आंसर निकालना है। सो फर्स्ट लेट मी राइट लाइक दिस। पहले क्वेश्चन को समझना है आपको, ये नंबर है, ठीक है, जो नंबर निकालना है वो मुझे नहीं पता है, कितने से एक्सीड कर रहा है, इस नंबर से कितने से एक्सीड कर रहा है? 12,345। ओके, मतलब इस नंबर से इतना ज्यादा है वो नंबर, ठीक है। नाउ वी विल राइट, वी डोंट नो दिस नंबर, सो required number is equal to wait, required number you need to arrange the numbers very carefully, हमेशा ones place से arrange करना शुरू करना, then you will not have any problem. Now 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8 and 8. So what is the answer? What is the answer? This. So you will write I am erasing this, I am not having much space, so you will write here, thus the required number is so this is the answer. Okay, so students, here I hope you can do question number 2 and 3 by yourself and you can understand that by yourself. So here your chapter number 2 of your book is completed, addition chapter is completed. So worksheet 3 part 1 is completed. Worksheet 3 contains addition and subtraction both the chapters. So here addition is completed. In the next video I will explain chapter number 3 of your book, which will be part 2 of worksheet number 3. Okay, so if you have any problem regarding this chapter, you can contact your class teacher and ask the problems. Okay, so this video is still here only. Thank you.